अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियोलॉजी फॉर एज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अल्ट्रासाउंड फिजिक्स के लेक्चर नंबर 10 में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम में हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम क्या है। चलिए चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड बीम। The reflection of an ultrasound beam refers to the phenomena where the ultrasound waves encounter a boundary between two different materials and a portion of waves bounce back towards the source. The bouncing back of ultrasound wave is used in medical imaging to create image of internal body structures, as the reflected waves provide information about density and composition of tissues they encounter. When the ultrasound encounters different tissues, part of ultrasound is reflected and the other part continues its travel through the deeper tissues. The strength of reflection from tissues depends on the difference of impedances between two tissue surfaces and the angle at the ultrasound interacts with tissue surfaces. If there is no difference in impedance between two tissues, there is no reflection, no echo. The reflected and transmitted directions are presented by the reflection angle theta r, transmission angle theta t. The reflection intensity is angle dependent. Result: to optimize imaging, the ultrasound transducer is the best perpendicular to the
Structure of interest. Since the ultrasound does not travel well in the air, even a very thin layer of air between the transducer and skin may reflect virtually all the ultrasound, making imaging difficult or impossible. A coupling medium, usually an aqueous gel, is applied between the surfaces of transducer and the skin is eliminate the air layers.